Hello friends, today we are going to start the female reproductive part of the flower, and that is known as the gynoecium. Here in the picture, as you see, the very first diagram, it is of the hibiscus gynoecium. The second one diagram is of the papaver, and the third one is the diagram of micaelia. Okay, micaelia in Gujarati we call it as a champa. Okay, so here this gynoecium is the female reproductive part, and as you know, it consists of mainly stigma, style, and ovary. Within the ovary, there is a presence of the ovules. Okay, so on the basis of the arrangement of the stigma, which is fused or free one, it is divided into syncarpus, pistil or carpel, or apocarpus carpel. Okay, so here in this first one, it consists of only one carpel. अगर उसमें एक ही carpel present है तो that is known as the monocarpellary. If there is a presence of two carpel, then it is a bicarpellary, and if there is a presence of three carpels, then it is a tricarpellary, because it's have the many carpels. Okay, so each carpel that is represent megasporophyll, or you can say this carpel is also known as the megasporophyll. Okay, so the gynoecium is, here the two terms are again, if carpel is 1, then it is monocarpellary. Carpels are 2, then it is bi. Or if the carpel is a 3, so then it is a tricarpellary. If in this gynoecium, चलो समझते हैं कि ये gynoecium के अरेंजमेंट के बारे में what exactly they want to say us about. So if they are talking about gynoecium, and that is apocarpus. Apo means away, and carpus means fruit. Carpus means fruit. So here, if the fruits or the gynoecium, it is separate or away from each other, so that is known as the apocarpus. Okay, and if the carpels are free, sorry, in the gynoecium means, here the apo means away, means these are the free carpels. So this carpel which is free from each other, which is separate from each other, so it is known as the apocarpus. Here of the apocarpus के example है micaelia, that is of champa, and ranunculus is the example of the apocarpus gynoecium. Second type of the gynoecium, that is a syncarpus. From Greek, sync means with or fuse together, and carpus means fruit. So if the carpel are fused from each other, this type of the gynoecium is known as the syncarpus. In syncarpus, example is hibiscus, as we seen in the diagram here. That is a clear features of the hibiscus rosa sinensis. It is having like this all are the carpels, and they all are fused together. Okay, so this carpel is a fused and known as the syncarpus gynoecium, which is seen in the hibiscus and papaver. Okay, the basal part of the carpel, as you know, it is a swollen portion and denoted as the ovary. Within the ovary, there is a presence of the ovule, which is attached with the center body part, and that is called as the placenta. So this one is the ovule, and which is attached with the center part with the help of the tube-like structure, and that is a placenta. Okay, so here it is the part of the hibiscus. In apocarpus condition, mostly if we see the basic difference between apocarpus and syncarpus, so see,
the difference between apocarpus gynosium and syncarpus gynosium. In apocarpus condition, ovary है वो क्या रहेगी, free ovary, okay, and maybe their parts are the fused, but the in apocarpus condition ovary must be a free one, okay. And it is a unilocular, means it only having a one chamber or one locule within it, okay. So if we talk about the syncarpus, here the ovary is maybe a unilocular to multilocular कंडीशन हो सकता है, राइट। तो ओवरी है वो क्या हो सकती है, यहाँ पे यूनिलोकुलर लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे है वो यूनिलोकुलर टू मल्टीलोकुलर हो सकती है। एपोकार्पस में ज़्यादा बात करें तो एपोकार्पस कंडीशन है वो प्रिमिटिव कंडीशन है, इट इज़ प्रिमिटिव प्लांट के अंदर आप लोगों को वो देखने को मिलेगा। और सिंकार्पस है दैट यू आर एबल टू सी इन द एडवांस्ड कंडीशन, राइट। और दूसरा है कि यहाँ पे एपोकार्पस मतलब एज यू नो कि भाई ये अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो सिंगल कार्पेल होगा तो वहाँ पे सिंपल फ्रूट होगा, और अगर एक से ज़्यादा नंबर में कार्पेल्स आर देयर विच इज़ एग्रीगेट, तो फ्रूट्स भी हमें एग्रीगेट फॉर्म में ही मिलेगा। सो इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपोकार्पस एंड सिंकार्पस। एपोकार्पस में सेपरेट होती है कार्पेल, सिंकार्पस में फ्यूज्ड होती है। एपोकार्पस है वो प्रिमिटिव कंडीशन में देखने को मिलेगा, सिंकार्पस एडवांस कंडीशन में। एपोकार्पस में ओवरी है वो यूनिलोकुलर, यहाँ पे यूनिलोकुलर से लेके मल्टीलोकुलर तक हो सकती है, ओके। यहाँ पे ओवरी के अंदर सिर्फ सिंगल प्लेसेंटा होगा, और यहाँ सिंकार्पस में प्लेसेंटा है, जनरली मोर देन वन नंबर में प्लेसेंटाज होगा, बट सिंगल प्लेसेंटा अकर इन सम केस हो सकता है ऐसा, राइट। चलो, तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट बिटवीन एपोकार्पस एंड सिंकार्पस गाइनोशियम, ओके। तो चलो जैसे हम लोग फर्दर मूव करते हैं, यहाँ पे हम लोग अच्छे से एक बार फिर से देख ले कि भाई देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द स्टिग्मा सरफेस मे बी अ स्टिकी रफ or maybe having some outgrowth on its surface, okay. And the base part is a swollen portion and that contain the ovules within it. This is the what we can say, it is the stigma portion. This is the style, this is the ovary contain ovules and each ovules connected with the help of the placenta, you can say, okay. ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है वो एक से ज़्यादा चैम्बर में हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि वो चैम्बर्स और खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉक्यूल्स बोलेंगे। द स्पेस बिटवीन द ओवरी, सिर्फ अगर ओवरी को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो वो जो स्पेस है ओवरी के अंदर, तो उसको लॉक्यूल बोलते हैं। अगर एक ही लॉक्यूल है तो उसको यूनिलॉक्यूलर बोलते हैं। दो लोक्यूल है, एक से ज़्यादा लोक्यूल है तो उसको मल्टी लोक्यूलर बोलेंगे, ओके। लोक्यूल मतलब होलो स्पेस विद इन विच ओवल्स आर प्रेजेंट, अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। मैंने जो ब्लैक लाइनिंग बताई है वो प्लेसेंटा की है, और ये मैं ब्लू डॉट दिखा रही हूँ दैट इज़ ऑफ ओवल, ओके। तो लाइकवाइज इट इज़ कनेक्टेड with the parts of the mother with the help of which they are nourishing the growing ovules. Ovule bearing a parenchymatous cushion like structure called placenta. जैसे कि मदर बॉडी के अंदर प्लेसेंटा का फंक्शन ये होता है, मेनली इट सप्लाइड द नरिशमेंट to the growing ovules. Likewise only this is the function of the placenta over here. Ovary may have one to several ovules, एक से ज़्यादा ovules है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। वन ओव्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन से प्लांट के अंदर सिर्फ ओवरी में वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वन ओव्यूल वाले एग्जांपल है वीट, फिर पैडी, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट राइस, एंड मैंगो। इन सब के अंदर ओवरी के अंदर देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ओनली वन ओव्यूल, ओके। एंड मल्टी ओव्यूल मतलब सेवरल ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन दी ओवरी। सो मैनी ओव्यूल्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हियर इज़ द एग्जांपल लाइक पपैया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। इन सब के अंदर
देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन ओव्यूल्स. ओके, सो यहाँ तक की बात हम लोगों ने किया, दैट इज़ ऑफ द पार्ट ऑफ द gynoecium. Okay, and along with that we talk about the parts of the gynoecium along with its apocarpus, syncarpus, multicarpellary, monocarpellary, bicarpellary, tricarpellary. Now we are moving on a structure of ovule. It is very important part of this theory, and that is a structure of ovule. समझते हैं what is exactly it's mean to say us about structure of ovule. ओके, पहले अच्छे से समझ लो व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली मीन टू से यस, कि भाई ये ओव्यूल होता है, वो एक तरफ से हम लोग जो बोल रहे हैं कि ओव्यूल इट इज़ प्रेजेंट और इट इज़ प्रोड्यूस विद इन दी ओवरी. सो ओवरी को हम लोग मेगास्पोरेंजियम ऐसा बोलेंगे. ओके, ओवरी इज़ द मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर प्रोड्यूस होता है ओव्यूल, और यू कैन से मेगास्पोर. So you can say that कि megaspore is produced within the megasporangium. ओके, मेगास्पोरेंजियम खुद क्या है? मेगास्पोरेंजियम खुद एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ, चलो ऐसा समझते हैं. इट इज़ अ वन पाउच लाइक स्ट्रक्चर. इट इज़ कवर्ड विद द आउटर लेयर, एंड दैट आउटर लेयर is known as the integument. कोई भी चीज़ का outer layer, that is known as the integument. So here it is the structure of the megasporangium, which is a covered structure, and that covered is known as the integuments, which cover the megasporangium. Okay, inside that क्या होता है कि there is a presence of the ovule which is fertilized, and after fertilization this fertilized ovule is converted into seed, and you can say that whole ovule which is fertilized, which is converted into seed, and the whole ovary after fertilization it is converted into fruit body. Okay, so an angiospermic ovule is typically an ovoid and whitish structures which occur inside ovary, where it is attached to the parenchymatous cushion like structure that is called as the placenta. ओके, तो यहाँ पे प्लेसेंटा की हेल्प से वो क्या होता है, जुड़ा हुआ है. एग्जैक्टली इफ़ वी वांट टू मेक अ डायग्राम ऑफ इट, ऑफ अ टिपिकल ओव्यूल, तो वो कैसा दिखता होगा वो हम लोग देखते हैं कि हाउ इट इज़ एग्जैक्टली लुक अलाइक. ओके, सो it would some would look like this and having like this structure. Here this area which is attached with the plant body. Okay, so here where this actually this portion is the F or funicle, you can say. This is the starting portion, so it is H or hilum. This is the outer layer that is known as the integument. This area actually which is attached with the ovule at upstrate, which cover the funicle, hilum and ovule prostrate, and that is the raphe. And this empty space is known as the nucellus, and the centrally located portion, this one is known as the embryo sac. Okay, so exactly it is look like this one. It is a typical ovule, जैसे कि मैंने बताया it is ovoid in a shape and it is a whitish in a color. Okay, so on the basis of that हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. हर एक टर्म्स को हमें देखना है. जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, फुनिकल,
हाइलम, राफे, बीच में ई मतलब एम्ब्रियो सैक, आई इंटेक्यूमेंट एंड न्यूसीलस। ओके, और जो ये यहाँ पे अपोजिट में 3 सेल्स है वो एंटीपोडल सेल है। रेड कलर से ये है वो सिनर्जिड सेल है, और सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन है वो एग है। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल ओव्यूल। यहाँ पे ये जो टाइप का ओव्यूल है जहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोपाइल, ये जो एंड है दिस एंड इज़ नोन एज द माइक्रोपाइल, और यह एंड है उसको चेलजा एंड बोलेंगे। तो यहाँ पे चेलजा एंड माइक्रोपाइल एंड दोनों एक दूसरे से एक ही लाइन में अलाइन है, अपोजिट है। तो दिस टाइप ऑफ द ओव्यूल इज़ नोन एज द एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल को हम लोग फर्दरली डिस्कस करेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो।